Good evening, everyone. Welcome to Ansarkari. Today we will do newspaper of January 24th. Coming to first article, the first article talks about the naming of 21 Andaman Islands on Paramvir Chakra awardees. Our Prime Minister Narendra Modi ji has named the Andaman and Nicobar Islands after Paramvir Chakra awardees. This will not only will inspire the younger generation, but also it showcase the diversity of India because the Paramvir Chakra awardee have made supreme sacrifices from different parts of the India itself. Then coming to next article, it is on page number 8. Government says that it will set up G20 task force to push India's digital agenda. So, what will be the agenda? The first one will be the talking about the digital infrastructure of India in finance, health, education, and also the goal of securing the cyber security and also reducing the boundary, reducing the different laws and helping the ease of doing business across the sector. The next article is on page number 10. We have already talked about the INS Vagir. So INS Vagir is related to Project 75 P75. It is being built by Mozango Dock Shipbuilder Limited. It is part of 6 Scorpion class submarine. Apart from INS Vagir, there are INS Kalveri, INS Khanderi, INS Karanj, INS Vela that have been already been commissioned. तो जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है इट हैज़ वेरी एडवांस स्टेल्थ फीचर्स, लॉन्ग रेंजेस, guided torpedoes, anti-ship missile, etc. It will help India's Navy to check China's rise in the Indian Ocean, and it will also patrol the Indian ships during times of war. It can also be used for deterrence in the choke point in Arabian Sea and also in the Indian Ocean. The next article talks about the World Economic Forum that it had agreed with the India's take that जो उनका जो एक ranking system था it had certain flaws. India has pointed out the under ministries of women and child development. She pointed out that there is some flaw in the ranking system. So the World Economic Forum, which presents global gender gap reports, it have said that it will include 1.4 million women in Indian पंचायत system. मतलब अगले बार जब रैंकिंग निकलेगा that the World Economic Forum will include the participation rate of women at the local government and also at the grassroots level. तो पीटी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट that is being prepared, that is prepared by WEF, in which India has ranked 135 behind several South Asian countries. The next article is page number 11, which talks about the call for action by WHO to prevent death due to contaminated syrup. तो पिछले 2 महीना में बहुत सारे केसेस हुआ था, फॉर एग्जाम्पल इन गैम्बिया वेयर द सिरप related death were reported, then other death were reported in Indonesia and in Uzbekistan. So syrup making company that is Marion Biotech, it is being linked to this syrup death has been linked to the Indian firm. तो बेसिकली यूपीएससी प्रीलिम्स में क्या पूछ सकता है, ये पूछ सकता है
कंटामिनेट्स क्या है? तो एथिलीन ग्लाइकोल एंड डाई एथिलीन ग्लाइकोल. It is very toxic to humans. It can cause abdominal pain, vomiting, diarrhea, headache, etc. and acute kidney injury. तो बेसिकली जो इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट यूज़ होता है, द कॉस्ट कटिंग मेजर दैट इज़ बीइंग यूज्ड बाय दीज फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उसके कारण ही हो सकता है डेथ हो. तो इसके लिए WHO ने अभी बोला है कि there should be action, there should be a report on these contaminated syrup issue. Then in the series of global governance award in India, we will talk about the grassroots level change that has been initiated by several younger generation DM, SDM, etc. Here, the project is brainchild of DM Kundan Kumar. He has been given the award where in Chanpatia, migrants have now become the entrepreneur at the startup zone. During the pandemic, many of the migrants left from the resident area and came back towards their own area. तो वहाँ पर वेस्ट चंपारण में स्टार्टअप जोन बनाया गया, which ran in the state godown, that is state food corporation godown. A skill based mapping exercise were carried out in the district, which helped to identify majority of the migrant population, and then the industry was started to be operated. Sewing machine were given for langa manufacture, plywood screens, एक्सेट्रा. बेसिकली ये डीएम ने जो भी लोग वापस माइग्रेट करके वापस आए ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, उनके लिए जॉब ऑफर दिया बाय एस्टैब्लिशिंग स्टार्टअप जोन इन दैट रीजन, इन चंदपटिया रीजन, थ्रू यूज ऑफ डेटा एनालिटिक्स, थ्रू यूज ऑफ डेटा मैपिंग स्किल्स. इससे ब्रेन ड्रेन भी कम हुआ, साथ ही साथ आउट ऑफ विलेज माइग्रेशन वो भी रिड्यूस हुआ, साथ ही साथ जो एम्प्लॉयमेंट का रेशियो है वो जोन का वो बढ़ा. देन नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन पेज नंबर 12 रिगार्डिंग द IBC. The Insolvency and Bankruptcy Code in 2016 brought about a structural change in the system. जो भी bankruptcy होता है उसको डील करने के लिए Insolvency and Bankruptcy Code लाया गया. But there has been several problems, such as the total realization of value is only 30.8%. Further, it had talked about कि बैंक्रप्सी का जो रिजोल्यूशन होगा इट विल बी लेस दैन 6 to 4 month, जो अभी लेकिन नहीं हो रहा है. इट इज़ क्रॉसिंग अराउंड 270 days. तो क्या क्या गैप्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स. फर्स्ट इज shortcoming should be to reduce the admitting of cases and streamlining the process through use of data. Second is pre-packaged insolvency resolution system that had been introduced for micro, medium, small enterprises. It should be increased it should be extended to other firms also. Then the third point is allow the corporate entity to continue the other project. Then the next article talks about the menstrual leave. Making period leave available to the student is a very step forward for the empowering of women workforce in general.
तो पहला इसमें पॉइंट है कि 1992 में बिहार इंट्रोड्यूस पीरियड लीव फॉर वर्किंग वीमेन, और साथ ही साथ मेंस्ट्रुएशन बेनिफिट्स बिल, इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट 2017 बट वॉज विड्रॉन। और साथ ही साथ जो टैबू टॉपिक है रिगार्डिंग टू मेंस्ट्रुएशन, it should be dealt with these kind of incentive based mechanism so that there is talk regarding this in the society itself, and also the empowering of women workforce should be achieved। लेकिन और भी कहना चाह रहा है कि साउथ कोरिया जापान में भी दिया गया था मेंस्ट्रुएशन लीव, पेड लीव, लेकिन majority of the women did not take up due to social stigma associated with menstruation। तो rather than मतलब apart from giving the paid leave, there should be a talk about it through HR department, through school education, etc., so that there is no social stigma regarding the menstruation। Then next article is related to the public university। This article basically says that if you are encouraging the growth of private sector with the help of foreign university, then there should be a system to encourage participation of students from not so well privileged background। That could be done through competitive exam, etc., and also the cost of the fees is very high, only privileged section of society can afford it। तो उसके लिए जो भी बाहर से यूनिवर्सिटी इंडिया में आएगा, क्या वो घटा सकता है फीस को? तो ये पूरा एक चैलेंजेस है दैट विल बी देयर इन फ्यूचर। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है टॉक्स अबाउट सर्टेन डेटा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। First is in 2017-18 regarding the periodic labor force survey and the CMIE survey, the age of people more than equal to 15, the employment declined by 14 million in 2022। Then the education transformation in India is going on between the age group 25 to 64, but this has not reflected in the data itself। CMI claimed that there is a loss of 14 million job between the January 20 and October 2022। Further, the female labor force participation rate for 2019 was around 11%। तो ये सब डेटा it can be used in examination। Then next article is on page number 16 regarding the government emergency use। तो गवर्नमेंट ने अभी जो BBC का जो डॉक्यूमेंट्री था उसको ब्लॉक किया यूजिंग द इमरजेंसी पावर। तो किसके अंडर में किया? तो दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021। इट हैज़ द पावर टू इशू कंटेंट टेक डाउन नोटिस टू सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज लाइक यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक एंड इमरजेंसी सिचुएशन। अब ये क्या लिखा है? इफ़ द मिनिस्ट्री बिलीव दैट द कंटेंट इज इम्पैक्टिंग द सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी, डिफेंस, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, और टू प्रिवेंट इंसाइटमेंट, इट कैन टेक डाउन कंटेंट। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट इम्यून इम्प्रिंटिंग। तो इम्यून इम्प्रिंटिंग क्या है? तो बेसिकली इम्यून इम्प्रिंटिंग इज अ टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रिपीट इट्स इम्यून रिस्पॉन्स। अगर इसको अगर हिंदी में समझते हैं कि अगर पहली बार जब वैक्सीन पड़ता है, पहली बार आप जब कोविड से इन्फेक्ट होते हैं, तो द बी सेल
दैट इज़ द मेमोरी सेल गेट्स ट्रिगर्ड, ताकि अगली बार जब सेम इन्फेक्शन होगा, सेम वायरस घुसेगा बॉडी में, तो उसको मार दिया जाएगा थ्रू मेकिंग एंटीबॉडीज इनसाइड द बॉडी। लेकिन अगर जो वायरस घुसा है अगले बार, अगर इन्फेक्ट किया अगले बार, वो सिमिलर रहेगा, सेम नहीं रहेगा, तो जो मेमोरी सेल है इट विल बी ट्रिगर्ड बाय द सेम मेमोरी सेल, नॉट न्यू मेमोरी सेल। हालांकि जो भी इन्फेक्शन होता है उसके लिए मेमोरी सेल बी जो होता है, बी सेल होता है, उसको ट्रिगर किया जाता है टू मेक एंटीबॉडीज़। लेकिन आपके पास ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है पहले, तो जो मेमोरी सेल पहले होगा वही यूज़ होगा बाय द बॉडी टू टेक डाउन द न्यू इन्फेक्शन। उससे क्या होता है, जो इम्यूनिटी है ना बहुत कम रहता है। यही बता रहा है कि when who had been previously infected by flu and were vaccinated against the current circulating variant, it produced antibodies against the first strain that they had encountered. It activates memory cell which produces cross reactive antibodies that are not as effective. Then next article is regarding the man-elephant conflict in Kerala. Out of 30,000 wild elephant in India, Kerala accounts for 19%. तो बस इसको याद रखना है. Then, due to the development and in the forest region, plantation, loss of habitat, development of corridor, roads, highways, etc., illegal mining, there is a depletion of forest that is causing the elephant to migrate from one forest to another to look for new pasture, that is causing the elephant man conflict. Then next article is regarding कि जो जर्नलिज्म में जो एक सोर्स होता है, तो जर्नलिस्ट क्या सोर्स को डिस्क्लोज कर सकते हैं कि नहीं, उस पर बात हो रही है। तो इंडिया में कैसा है, इंडिया में अंदर आर्टिकल 19 देयर इज नो स्पेसिफिक लेजिस्लेशन दैट प्रोटेक्ट्स द जर्नलिस्ट फ्रॉम बीइंग आस्क्ड टू डिस्क्लोज देयर सोर्सेस। जो बोलते हैं ना कि सोर्स से पता चला है मुझे, तो सोर्स को डिस्क्लोज नहीं करना का एक आर्टिकल जो एक होना चाहिए प्रोटेक्शन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वो अवेलेबल नहीं है जर्नलिस्ट को। इफ़ दे हैव बीन आस्क्ड देन दे हैव टू रिवील द सोर्स। क्यों? कोर्ट जो इंडिया में है, दे हैव ऑल्सो आस्क्ड in the public interest to reveal, disclose their sources. Investigative agency can issue notice to anyone, including journalists, to provide information. Like any citizen, journalists can be compelled to give evidence in court. That's all for today. Coming to the newspaper of January 25th. The first article talks about the contribution of B.V. Joshi in the architecture sector. So, he has already won the Pritzker Architecture Prize. तो ये पूछ सकता है in 2018. तो B.V. Joshi, he is related to the architecture field. उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन पेज नंबर 10 regarding the visit of Egypt's president Abdel Fattah el-Sisi. He has for the first time become the chief guest of at the Republic Day celebration on 26th January. The bilateral trade between the India and Egypt is around 7.26 billion, or more than 50 companies have invested in around 3.15 billion in Egyptian economy, including chemical, energy, textile, garment, agribusiness, etc.
The next article is on page number 12 regarding the modernization of police. So there has been going off the All India Conference of DGP, IGP, head of Central Armed Police Force and Chief of Counter Intelligence Agency. तो प्रकाश सिंह जो बहुत पायनियर है रिगार्डिंग द पुलिस रिफॉर्म, ही हैज़ गिवन some points regarding the modernization of पुलिस. तो क्या क्या प्रॉब्लम है पुलिस में? तो द सॉल्यूशन शुड बी फॉर बेटर पुलिसिंग, repealing of absolute laws, prison reform, need for cooperation and operation between the state and center police, sensitivity training among the police force. तो जो नया क्राइम हो रहा है रिगार्डिंग द ड्रग ट्रैफिकिंग, क्रिप्टो करेंसी, साइबर क्राइम एक्सेट्रा, वी नीड न्यू पुलिस फोर्स, मतलब मोर रिफॉर्म, मोर सोफिस्टिकेटेड, मोर मॉडर्न पुलिस फोर्स. उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो पहला पॉइंट है मॉडल पुलिस एक्ट शुड बी इम्प्लीमेंटेड. ब्रिटिश के पास एक पुलिस एक्ट है फॉर द इंटायर कंट्री, इंडिया के पास नहीं है, डिफरेंट है फॉर डिफरेंट स्टेट्स. देयर शुड बी अ मॉडल पुलिस एक्ट. पहला पॉइंट इसको नोट कर लेना चाहिए रिगार्डिंग द सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव इन GS पेपर 3. उसके बाद सेकेंड पॉइंट है there are approximately 5 lakh vacancies across the country. We need to fill that because the average population of the policemen is around 195 per 1 lakh population as compared to other countries that is more than 400-300. तो आधा है एक तरह से जो पुलिस फोर्स होना चाहिए इंडिया में with respect to population. Third is the housing facility of the police person should be adequate. That will increase the morale of the police. The National Police Commission has already recommended that there should be 100% family accommodation for all non-gazetted personnel. It is around only 32%. Fourth point is regarding training. Only 6.4 police in the state were given in-service training. देन फिफ्थ पॉइंट इज रिगार्डिंग अ फेडरल क्राइम. जो क्राइम है ना उसको डिवाइड करना चाहिए स्टेट और फेडरल में. फेडरल क्राइम विल हेल्प टू रिड्यूस द बर्डन ऑन द स्टेट पुलिस फोर्स. इट विल हेल्प टू इंक्रीज द एफिशिएंसी इफेक्टिविटी ऑफ द सिस्टम बिकॉज द फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी विल इन्वेस्टिगेट इट. उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग द स्मार्ट पुलिस, दैट इज द पुलिस शुड बी स्ट्रिक्ट, सेंसिटिव, मॉडर्न, मोबाइल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक सेवी एक्सेट्रा. तो ये जो पूरा 6-7 पॉइंट है इससे करने से जो मॉडर्न पुलिस फोर्स होगा वो ताकत होगा और आने वाले वक्त में जो इंडिया का जो विज़न है एक लॉ एंड ऑर्डर बेस्ड सोसाइटी बनने का वो पूरा होगा. द नेक्स्ट आर्टिकल इज द सेम regarding the naming of India's Nicobar Islands on after परमवीर चक्र अवॉर्डीज. तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, फैक्ट है रिलेटेड टू प्रीलिम्स, दैट इज इन 2018 द रॉस आइलैंड जो वहाँ पे था इट हैड बीन रीनेम्ड टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड. नील आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड वेर नेम्ड शहीद द्वीप एंड स्वराज द्वीप. तो नील आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड, रॉस आइलैंड, दे आर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. Then next article talks about the UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड. तो इसमें ये आर्टिकल कहना चाह रहा है कि जो हम लोग बात करते हैं UCC का, इट इज़ ओनली बिटवीन रिलीजन. तो क्या UCC जो है उसको रिलीजन स्पेसिफिक होना चाहिए? इट इज़ यूनिफॉर्म इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन. तो क्या क्या आर्गुमेंट होना चाहिए? फर्स्ट इज हिंदू इनहेरिटेंस distinguishes between the property and the joint family property rights by birth. No other personal law makes this distinction. Further, within the Hindu law, the states
डाइवर्स, हर एक स्टेट्स का विद इन द हिंदू लॉ डिफरेंट है. देन द थर्ड पॉइंट इज right to will is unrestricted among Hindus, Christian, Muslim, Parsis, but the Muslim law restricts will of one third property. सुन्नी शिया का डिफरेंट है, इस पर मतभेद है रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी. फोर्थ पॉइंट इज इनहेरिटेंस लॉ ऑफ द हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी इज जनरली इक्वल, सेम है करीब करीब. बट अंडर मुस्लिम प्रेसिडेंट लॉ द शरीयत वो इन्फोर्सेस द इनहेरिटेंस लॉ. The women's share is less than men's share. The fifth point is regarding the other property. इंडिया में 1937 का जो शरिया एक्ट है, इट गवर्न्स द मुस्लिम प्रॉपर्टी इन द कंट्री. देन सिक्स पॉइंट इज रिगार्डिंग द डिफरेंस इन इनहेरिटेंस. तो ये जो इतना डिफरेंसेस है सोसाइटी के बीच में, रिलीजन के बीच में, इसको कैसे डील करना चाहिए, इस पर बात करना चाहिए यूसीसी को. द यूसीसी शुड बी अबव द आइडेंटिटी पॉलिटिक्स. इट शुड अप्लाई टू ऑल इंडियंस. इट शुड बी जेंडर जस्ट लॉ एंड इनकरेज द डिस्कशन बिटवीन द रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा. तभी जाके जो एक सेकुलर लॉ होगा बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट will be just for all the gender, jatis, caste, religion, etc. The next article is on page number 14 regarding the contribution of DM विशाल सिंह. तो जैसे पहले पढ़े थे कि एक्सेलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड, तो इन्होंने क्या चेंज लाया सोसाइटी में एट द ग्रास रूट लेवल. ही हैड एस्टैब्लिश्ड अ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम दैट हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द एग्रीकल्चर एट द ग्रास रूट लेवल विद इन द डिस्ट्रिक्ट. तो कैसे किया उन्होंने? फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैड द डिस्ट्रिक्ट जो था मलंगकिरी, इट इज़ इन उड़ीसा. इट इज़ अ रेन फेड डिस्ट्रिक्ट, तो पानी का किल्लत होता है वहाँ पर. तो ही हैड इस्टेब्लिश द इरीगेशन फैसिलिटी. तो वहाँ पर इरीगेशन फैसिलिटी था नहीं, तो उन्होंने जो डिफरेंट स्ट्रीम्स को यूज़ किया, नाला से पानी को डाइवर्स किया और एक जगह ला करके चैनल किया. उसके बाद यूजिंग ऑफ स्प्रिंकलर्स एंड माइक्रो इरिगेशन ही हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड सेवरल विलेजेस for integrated watershed management and also the integrated farming itself. तो कॉस्ट था उसको, उसमें विलेजेस का भी रोल था. टोटल जो कॉस्ट 19 लाख रुपीज़ था ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट इन विच द विलेजेस हैव इंक्लूडेड 3 lakhs. तो बेसिकली ही हैव यूज्ड 3 to 4 points. पहला है कि ही न्यू द प्रॉब्लम एट द ग्रास रूट लेवल. सेकेंड, he used the practical methods, not very costly और बहुत ज़्यादा highly technical था. he used the basic practical methods to solve the challenges. Third is he also made the villages as a stakeholder in the project itself. The next point is regarding the India's transition into the renewable source of energy. According to the Global Energy Monitor, it says that India will save up around 19.5 billion per year if it completes transition to the renewable source of energy and reduce the amount of coal in their energy consumption. बेसिकली चाइना अभी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट्स एक्सेट्रा. तो इसमें बता रहा है कि 19.5 बिलियन जो एनुअल सेविंग होगा, इट कैन बी फर्दर यूज्ड इन रिन्यूएबल सेक्टर इटसेल्फ. तो इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन होगा. इंडिया का जो डिपेंडेंसी ऑन कोल है वो कमेगा, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो ट्रांजिशन है टूवर्ड्स द ग्रीनर एनर्जी
वो स्पीड होगा. Then next article is talking about the norovirus. Norovirus is related to the gastrointestinal infection. It is transmitted through foods contaminated with the virus, touching of surface and also the infected person. तो बेसिकली इसको विंटर वॉमिटिंग डिजीज़ ही बोलते हैं. इट इज़ कॉमन ड्यूरिंग द विंटर एंड कोल्डर कंट्रीज. इट किल्स अराउंड 2 lakh person globally per year, mostly under 5 years of age and above 65 years of age. The next article is talking about the relationship between Colombo and India, Sri Lanka and India. तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो पहला 2-3 पॉइंट है, इसमें पहला है कि न्यू दिल्ली हैज़ गिवन आउट अराउंड $4 billion बेल आउट टू श्रीलंका. द डेट ट्रैप is due to the China's share, that is 52% of total debt of Sri Lanka. Further, the cooperation between India and Sri Lanka is around several 4 pillars such as energy security, food security, currency, foreign exchange, and India's investment. Through India investment in the Colombo port, and also the investment in the infrastructure related to the tourism and energy. Further, on the social issue, India says that Sri Lanka should implement the 13th Amendment that provides for the protection to the Tamil minority in the Sri Lanka. That's all for today. Thank you.